हेलो एवरीवन, वेलकम टू ixamBee। माय नेम इज चंद्र प्रकाश जोशी। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 73,000 करोड़ का इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस बाय फाइनेंस मिनिस्टर। लेट मी शेयर सम ऑफ द न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स। यू मस्ट हैव गॉन थ्रू दिस एंड यू नो, अगर सीरियसली आप गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं, यू वांट टू क्रैक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यू हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दीज न्यूज आइटम्स। आपको लाइन बाय लाइन भी नहीं पढ़ना है, बट व्हाट इज द मेजर हाईलाइट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। वीडियो पूरा देखिए। एंड में मैं एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो डिस्कस कर रहा हूं। सो दिस इज द न्यूज़पेपर हेडलाइन हियर। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू बूस्ट कंज्यूमर स्पेंडिंग। क्या होता है कि इकोनॉमी में अगर खर्चा होता है, अगर लोग ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, देखिए खर्चा करना बुरी बात नहीं है जैसे कई लोग बोलते हैं, खासकर पुराने लोग बोलते हैं, लेकिन खर्चा करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर कोई खर्चा कर रहा है एक्स तो वाई उससे कमा रहा है, और वाई ज्यादा कमाएगा तो वाई भी ज्यादा खर्चा कर पाएगा। कंज्यूमर स्पेंडिंग को बढ़ाने के लिए पहला मेजर जो गवर्नमेंट लेके आई है दैट इज एलटीसी कैश वाउचर स्कीम। फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज एलटीसी। लीव ट्रेवल कंसेशन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को और सारे पीएसयूज वालों को भी मिलता है। तो आप बैंक में जाइए, आरबीआई में जाइए, सेबी में जाइए, इवन प्राइवेट सेक्टर में भी कंपनीज एलटीसी देती हैं। नॉर्मली दिस इज ए ब्लॉक ऑफ 4 years। 4 years में नॉर्मली देयर आर 2 slots given in most of the companies, most of the organizations, one for traveling to your native place and second you can travel anywhere in India, but डिटेल्स की जरूरत नहीं है आपको, जस्ट अंडरस्टैंड लीव ट्रेवल कंसेशन। एलटीसी होता है जिसमें आपको ट्रेन या एयर फेयर का रिइंबर्समेंट मिलता है डिपेंडिंग ऑन योर एलिजिबिलिटी। से फॉर एग्जांपल आरबीआई ग्रेड बी तो सालों से एयर फेयर देता है, बट बहुत सारी जॉब में ये ट्रेन फेयर भी हो सकता है। इसके अलावा देर इज ए लीव एनकेसमेंट ऑफ 10 days सैलरी। सो यू अंडरस्टैंड, इट मीन कि 10 days की जो आपकी सैलरी आएगी उसको आप कैश ले सकते हैं। ये डिटेल भी आपको नहीं चाहिए, कैसे ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं। यू जस्ट फोकस ऑन योर एग्जाम। सो व्हाट इज द बेनिफिट अंडर दिस इज LTC voucher scheme will allow the employees to get money worth 3 times the ticket fare plus 1 time the leave encashment. So this time government has come out with a cash voucher scheme that you actually get a cash voucher, but you have to spend this money. So it is a cash voucher and you have to spend this money in buying non-essential goods. Non-essential goods where the GST is more than 12%. Say for example, if you say I will take this cash voucher from the government and I will spend this in buying, say, food items like wheat, rice, sugar. So these are essential things not allowed in this scheme, and this scheme is applicable to all central government employees, including public sector bank and all public sector undertaking by ONGC, SAIL, BHEL, LIC, etc. It is optional for state government employee and private companies. So as I said, private companies also have such a scheme, but government has left it to optional to them. It is expected that this will lead to 28,000 crore of the demand. 19,000 will come from state central government employees, central government PSU, and 9,000 will come from state government. And again, I am repeating you, these things somewhere we have to read, but not that we have to remember every detail. Let me explain you further, but here I am also telling you about Navratri offer at ixamBee, where you can get 33% discount on combo course and 27% discount आपको मिल सकता है कोई भी कोर्स लेने पे। For details, you visit at ixamBee.com and hope you must have listened to these successful people. इनके कंप्लीट वीडियो हमारे YouTube चैनल पर है, और you visit this page, testimonial page of ixamBee, where you will find all these detailed video testimonials. The learning experience at ixamBee is the reason that we have exceptional success rate in the first years of the course launch. For those who want personalized experience, for detail, please visit at the website RBI Grade B exclusive online course. Now coming to the second measure on boosting the consumer spending is the special festival advance scheme. As the name suggests, festival time के लिए आपको advance मिल रहा है, एक तरीके का आप लोन बोल सकते हैं उसको। This was abolished by 7th Pay Commission earlier, but now it is reintroduced till March 31st, 2021. इसमें होगा क्या कि कोई भी एम्प्लॉई वन टाइम इंटरेस्ट फ्री 10,000 रुपए तक का एडवांस ले सकता है अगेंस्ट द सैलरी। एम्प्लॉय ऑफ अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड PSUs
एंड ये एडवांस आएगा आपको प्री लोडेड रुपे कार्ड में. एंड अंडरस्टैंड, आई हैव नॉट सेड दैट all this is coming in form of digital vouchers, rupee card, so that you spend the money and government earns by GST. And this 10,000 rupees with interest will be recovered in 10 installments. The scheme is again applicable for central government employees, PSU employee and government undertaking, and it is optional for state government employees. From there, government expect 12,000 crore disbursement, 4,000 from central and additional 8,000 if state government also implement. So these two, LTC and festival advance, are to boost expenditure. The second objective is to boost capital expenditure. The first one was spending, second is capital expenditure. Here special assistance for states, इंटरेस्ट फ्री 50 year 50. So this is a capital expenditure. आप समझते हैं capital expenditure means spending money in say building factories, building roads, highways, school, जहाँ पर आपको रिटर्न तुरंत नहीं मिलते हैं. It's a long term investment. So here government is giving 12,000 crore to state for capital expenditure, and these can be used for new projects or online ongoing capital projects, as I explained to you, and this is to be spent by March 21. So you can expect most of the time it will be going in ongoing projects, and this funding will over and above all the additional borrowing ceiling given to the states, because so many other borrowings are facilitated to state government. Interesting part is bullet repayment after 50 years, no servicing required for 50 years. Now you can expect कौन स्टेट गवर्नमेंट होगी जो इसको नहीं लेगी. 50 साल बाद एक साथ बुलेट पेमेंट करनी है, नो इंटरेस्ट और नो EMI टू बी पेड फॉर 50 years. The state government will think we don't know who is going to rule up to 50 years. Okay, so this will definitely boost the capital expenses here. Then special assistance to states is to be considered in 3 parts. Part 1, 200 crore each to 8 northeast state, and 450 करोड़ ईच टू उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश. मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको सुन लीजिए, बट नॉट दैट यू हैव टू मग अप एवरी ऑफ दिस डिटेल. पार्ट 2 इज रिमेनिंग स्टेट एज पर 15th फाइनेंस कमीशन devolution will get 7,500 crore, and 50% is given initially, 50% will be given up to the utilization of the first 50%. Okay, the states that fulfill at least 3 out of the 4 reforms spelled in Aatma Nirbhar Bharat package, they will get more 2,000 crore here. So that makes this 12,000 crore. So in this 12,000 crore, now you understood that there are part 1, part 2, part 3 special benefits for northeast state, then Uttarakhand and Himachal Pradesh here. So without mugging up all, if there is a multiple choice question, you can answer that. Second measure to boost capital expenditure is enhance budget provisions. Additional 25,000 crore will be provided for capital expenditure on road, defense, water supply, urban development, and domestically produced capital equipment. And this amount is in addition to 4 lakh crore, 4.13 lakh crore given in the union budget. तो 25,000 करोड़ एडिशनल प्रोविजन कर दिया गया है इस तरीके के कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा. नाउ डूइंग ए क्विक रिकैप, अभी तक क्या किया गया है आत्मनिर्भर भारत पैकेज में. इट वाज अनाउंस्ड ऑन 12th May 2020. इसमें 20 लाख करोड़ का ये पैकेज था, विच इज इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 10% ऑफ द इंडिया GDP. ये मेजर नंबर्स आपको हमेशा पिक्चर रहना चाहिए दिमाग में. और इस पैकेज के अंदर सेंट्रल हैज इंक्रीज द बोरोइंग लिमिट्स ऑफ स्टेट फ्रॉम 3% to 5% फॉर 2021. जब हम 2021 लिखते हैं, इट मीन्स अप्रैल 2020 टू मार्च 2021. इसको बहुत बार फाइनेंशियल ईयर 21 भी लिखा होगा, you shall know that. And this increased borrowing limit is linked to specific reforms undertaken by the state in the area of the universalisation of the One Nation-One Card, ease of doing business, power distribution and urban local body revenues. ये सब हमने डिटेल में डिस्कस किया है in the video in the same channel. You can go to that. But even if you do these recap, it will help you in answering the exam question. Then RBI, what RBI has done, TLTRO of 1 lakh crore to reduce the borrowing cost of the corporate, and this money is going through banking channel. Then there is enhanced open market operations and open market operations in state development loan. ये एकदम नई चीज है, अभी 2-3 दिन पहले ये हुआ था कि फर्स्ट टाइम RBI has opened this state development loan under OMO. And then RBI enhanced the retail exposure
लिमिट of the banks to 7.5 crore. जो अक्टूबर मॉनेटरी पॉलिसी वाला वीडियो है, all these things have been explained in detail about the risk weightage, reduction of the risk weightage in housing loan. Please go through that. Coming to the question answer, ये बहुत important है. Which of the following statement about stimulus package is false? Stimulus package is meant to increase demand in the market. जी ये तो सही है, डिमांड बढ़ाने के लिए ही स्टिमुलस पैकेज आया है. स्टिमुलस पैकेज हेल्प इन इकोनॉमिक रिकवरी, बिल्कुल सही है. स्टिमुलस पैकेज ऑलवेज लीड टू इन्फ्लेशन. सी दिस ऑलवेज, ओनली, these kind of words are actually your indicator this something is lying in this statement. अब हमेशा स्टिमुलस से इन्फ्लेशन बढ़ेगा जरूरी तो नहीं है, बिकॉज इन्फ्लेशन इज ए सप्लाई एंड डिमांड फिनोमिना. स्टिमुलस होने से, मनी सप्लाई बढ़ने से डिमांड तो बढ़ेगी, बट व्हाट अबाउट द सप्लाई? इफ देयर इज ऑलवेज ए सप्लाई, इन्फ्लेशन में नॉट इंक्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट PSBs and PSUs can take a benefit of LTC Cash Voucher Scheme up to which date? See, amount नहीं पूछा हमने क्वेश्चन में, we have asked the date, and you very well know that government is interested in doing all this in this financial year. Correct answer is option D. Next question, which of the following statements regarding LTC's Cash Voucher Scheme is false? LTC's Cash Voucher Scheme is meant to infuse demand in the economy. ये तो सही है. It is applicable to only central government and PSC. Again, only. जहां आपको ये मिला, always, only, never, be very careful. We have discussed that it is applicable for even state government and even private sector also. Let me read all other also. ये हमेशा बहुत जरूरी है. अगर आंसर मिल भी गया है, पूरे ऑप्शन पढ़ने हैं. जनरल अवेयरनेस में फेज 2 में आपको टाइम की कमी नहीं होगी एग्जाम में. डोंट अननेसेसरली रश, एंड आई एम टेलिंग यू द फर्स्ट टाइम राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दोबारा आप वो गलती करोगे जो आपने पहली बार करी है, दोबारा गलती पकड़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं. Employees are allowed to buy non-essential goods only through this scheme. ये भी एकदम सही है. It is expected to generate demand worth of 28,000 crore rupees. If I tell you frankly, by the time exam comes, I may forget this. क्योंकि स्टेटमेंट बी एकदम क्लियर आंसर दिख रहा है, तो फिर भी आप ये क्वेश्चन कर ले जाओगे. हमने ये डिस्कस किया था, आपको याद भी रहेगा कि दिस स्कीम इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर स्टेट गवर्नमेंट एंड इवन प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो. स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम अलाउज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टू रिसीव एन एडवांस ऑफ, ये तो बहुत इजी है, 10,000 रुपीज का एडवांस इसमें दिया जा रहा है. ये नंबर तो याद रखने में मुश्किल नहीं होगा. Which of the following is not a capital expenditure for the government? So as I said in the video, एक बात याद रखिए, capital expenditure means an expenditure which is done for long term and which helps in generating more economic activities. अब यहाँ पे salary paid to civil servant, is it a capital expenditure? ये तो revenue expenditure हो गया, because इससे आपने कोई प्लांट, मशीनरी या रोड नहीं बनाई. यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है. School building, it is a capital expenditure. Defense equipment is a capital expenditure. Airport and dams, these are also capital expenditure. So the correct answer is option 1. Capital expenditures are used for the creation of physical and financial assets or depletion in financial liabilities. फाइनेंशियल लाइबिलिटीज भी अगर कम होती है, फॉर एग्जांपल लोन लिया हुआ है वर्ल्ड बैंक से, तो वो लाइबिलिटी है, उसमें रिडक्शन जो होता है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है. वो लोन की अगर ईएमआई चुकता की, उसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट गया लोन रिपेमेंट में आईएमएफ को, वर्ल्ड बैंक को, उसको भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में लिया जाता है. और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं, दे डोंट क्रिएट एनी फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स. आई थिंक दैट मेक्स इट क्लियर. फॉर मोर वीडियोस, स्टे ट्यून्ड टू द चैनल. फॉर अवेलिंग द ऑफर्स, these are the code mentioned here which you can use at ixamBee.com. Don't forget, government exams are made easy by ixamBee. Please subscribe to the channel and press the bell icon.